Hello students, this video is for grade UKG. Let us start. This sheet is divided into 3 different parts. So we will learn about 3 different sections: English, Maths and EVS. We will learn about 3 different subjects: English, Maths and EVS. Let us start with our first subject, English. The question is, write new word that rhymes with the given word. What you have to do is, you have to write the new word, means new rhyming words. आपको क्या करना है, नए rhyming word यहाँ पे write करने हैं. ओके, लाइक जो भी वर्ड दिए हुए हैं इनका जो rhyming word होगा मीन्स ऑलमोस्ट सेम जो सुनने में वर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे राइट करने हैं. अंडरस्टूड? लाइक निप, NIP, nip. What will be the rhyming word for nip? Zip, ZIP, zip. Nip, zip. Another word, man, MAN, man. Okay, so what will be the rhyming word for man? Pan, PAN, pan. Or you can write can, CAN, can. Understood? The another word is kite, KITE, kite. इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? What you can write as the rhyming word for kite? Light, LITE, light. Okay, you can write LITE, light. It means the another same thing. मतलब लाइट का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बता रही हूँ. लाइट का देखो, एक लाइट होता है LIGHT, लाइट. दैट मीन्स लाइट मतलब एक होता है हल्का. LIGHT, लाइट मतलब होता है हल्का. या फिर यू कैन से द लाइट बल्ब. ओके, जो हम लोग बल्ब यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट. एंड दिस लाइट, LITE, लाइट, ये क्या है? इट इज समथिंग, मीन्स कॉपी ऑफ समथिंग. जैसे कि कुछ है उसका कॉपी, मीन्स सेम थिंग ही होगा बट इन कम अमाउंट. मतलब कम अमाउंट में होगा, मतलब कम पैसों में होगा. किसी चीज का डुप्लीकेट यू कैन कैसे. ओके, यू कैन से द डुप्लीकेट. मतलब सब कुछ उसका वैसे ही है बट दैट इज नॉट ओरिजिनल. ओरिजिनल नहीं है वो, थोड़ा डुप्लीकेट है. ओके, या सो जैसे कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं. सो हम क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं लाइक एडिडास, गुची. ओके, सो ये सारे क्या हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं. कुछ लोग क्या होते, सो इन सब की जो चीज़ें आती हैं वो क्या होती है, कॉस्टली होती हैं. और कुछ लोग क्या करते हैं, मीन्स दूसरी चीज़ों को या फिर उसी कंपनी की चीज़ों को कम रेट में कहीं से लेके आ जाते हैं और उसमें लोगो लगा देंगे एडिडास का, उसमें लोगो लगा देंगे गुची का, और उसको रोड साइड पे सेल करेंगे. अगर कोई लाइक शर्ट है, ओके, एडिडास की कोई शर्ट है और मतलब उसके जैसे दिखने वाली कोई एडिडास की शर्ट, मतलब दूसरी शर्ट ले आए और उस पर लोगो लगा दिया एडिडास का. ओके, सो और वही शर्ट आप मॉल में जाओगे, ब्रांडेड कंपनी का लोगे, तो वो शर्ट आपको 2000 रुपीज़ की मिलेगी. ओके, बट रोड साइड पे सेल में वो आपको 500-200 रुपीज़ में वो शर्ट्स मिल जाएंगी. ओके, सो दैट इज कॉल्ड लाइट, मीन्स डुप्लीकेशन. ओके, या सो LITE, light. Feel, FEEL. You will write the rhyming word for feel. From here only you will write all the rhyming words by yourself so that you can practice these. Okay, you can practice this. Let's move to the next section, which is of maths. What you have to do in this question, match the pictures which look same. So in this
सिंपली यू हैव टू मैच द सेम पिक्चर्स, सेम पिक्चर्स को मैच करना है, लाइक स्ट्रॉबेरी टू स्ट्रॉबेरी, यूनिकॉर्न टू यूनिकॉर्न, टी पॉट टू टी पॉट, टेडी बेयर टू टेडी बेयर, स्टार टू स्टार. अंडरस्टूड? व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मैच द सेम पिक्चर. जो पिक्चर दिखने में एक जैसी है, सेम है, उसे आपको एक दूसरे से मैच करना है. अंडरस्टूड? या. सो let us revise number name from 1 to 20. Okay, 1 से लेके 20 तक numbers name revise करता है. Speak with me. ONE1, TWO2, THREE3, FOUR4, FIVE5, SIX6, SEVEN7, EIGHT8, NINE9, TEN10, ELEVEN11, TWELVE12, THIRTEN 13, FOURTEN 14, FIFTEN 15, SIXTEN 16, SEVENTEN 17, EIGHTEEN 18, NINETEEN 19, TWENTY 20. Okay, so we have read number name from 1 to 20. Let us move to our next section, last section, which is of EVS, last section of EVS, Environmental Studies. Write down any 4 means of transport. Write down any 4 means of transport which will be water transport. Means कोई 4 water transports के नेम हमें यहाँ पर राइट यहाँ पे हमें राइट करने हैं. क्या राइट करने हैं? कोई 4 वाटर ट्रांसपोर्ट्स के नेम राइट करने हैं. अंडरस्टूड? So you have to write any 4 water transports name. Means the transport which moves in water. ऐसे ट्रांसपोर्ट के नेम राइट करने हैं, ऐसे व्हीकल्स के नेम राइट करने हैं जो कि पानी में जा सकते हो. लाइक शीप, SHIP, शीप. बोट, BOAT,
T, boat. Like submarine. 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 Spell with me. Submarine. 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 Okay. Do you know submarine can move both inside the water and outside the water. मीन्स पानी के ऊपर भी, मीन्स पानी के बाहर भी चल सकती है और पानी के अंदर भी, मीन्स पानी के नीचे भी चल सकती है. जैसे हम लोग स्विमिंग करते हैं, जब डाइव करते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं ना, उस तरीके से सबमरीन पानी के अंदर भी चल सकती है. एंड सबमरीन्स आर यूज्ड फॉर नेवी. ओके, सो दैट दे कैन मार्क आउट दी एनिमीज. उसके थ्रू वो लोग एनिमीज, अगर पानी के अंदर कोई एनिमी छुपे हैं, कोई दुश्मन छुपा है, तो उसको भी वो देख सकते हैं. या फिर अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि उन्हें हार्म कर सकता है, तो वो उसे भी पानी के अंदर देख सकते हैं. अंडरस्टूड? सो यू हैव टू राइट एनी 4 मीन्स. ओके, वाटर ट्रांसपोर्ट के कोई 4 लिखने हैं. मैंने आपको 3 बता दिए. एक आप खुद से सर्च करेंगे, एक आप खुद से राइट करेंगे यहाँ पे कि कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो वाटर में चल सकता है. अंडरस्टूड? Yeah. So this was all about today's sheet. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, you can ask me. Thank you.